अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं सऊदी अरेबिया से। अलहाज मियां गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक Thank you, Prime Minister. And we are very glad to be today in Pakistan, a dear country to all Saudis, from His Majesty and the youngest Saudi in Saudi Arabia. We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. So we believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. So we are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase one. And definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. We've talked about tourism, and Mr. Prime Minister ruled my plan, because we plan to announce that after a few days, or maybe 10 days from today. And we are not planning to announce that we're going to target 100 million tourists. So usually we do some trick to announce, a little number and to achieve more. But now we have to be committed to 100 million tourists. I cannot promise that in 2030, but we will reach that one day. Today we have 18 million tourists, and we believe we're going to succeed 50 million tourists super easily in the next coming 15 years, 20 years, and 100 million tourists. It's very reasonable target for Saudi Arabia. We have a lot of heritage, we have amazing nature, we have great people, we have infrastructure, we have stability, we have everything. We have even the financing and the money to invest in that area. So we will work with Pakistan in all of these things, economically, politically, and security, and we will be sure that we are creating amazing, great future for Saudi Arabia and Pakistan and for our region. We believe in our region, that's why we're investing in it, and we believe that we will gonna have one day great Middle East surrounded by Pakistan from the east side. This is my first trip east since I became Crown Prince, and the first country is Pakistan. Thank you. Honestly, just two things I just want to mention. Number one, that we have during Hajj, we have people going to Saudi Arabia, and we would just like to request you, for the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the three big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us, and especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, and some of them are old. So we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan, and secondly, I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. There are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request
that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind who work hard, send their money back, and we would, a special request from them that, you know, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. They basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. Thank you. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अशाइये की तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशाइये की तकरीब से खिताब करते हुए उनको एक दफ़ा फिर वेलकम किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और उनके जो वफ़द के अराकीन हैं, मोअज़्ज़ज़ अराकीन हैं, उनको इस खुशामदीद कहा एक दफ़ा फिर अशाइये में, और ये कहा कि पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब से, सऊदी अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, यानी पिछले 6 माह में, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उन्होंने कहा है कि वो लम्हा था जब वो खाना काबा के अंदर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह दरख्वास्त की है वली अहद से कि जो पाकिस्तानी लेबर है, जो पाकिस्तान का मजदूर है, जो सऊदीया में जाते हैं अपने अहले खाना को यहाँ पर छोड़कर उनके लिए पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें सऊदी अरेबिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जो लोग हैं, जो तबका है, जो गरीब तबका है, ये उनके दिल के बहुत करीब है, और वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को अपने लोगों की तरह सऊदी अरेबिया जो है वो ट्रीट करे और उन लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको आसान करने के लिए इक़दामात करे। इसके जवाब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि यकीनन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इन लोगों का मैं अपने ही लोगों की तरह ख्याल रखूंगा। नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब किया उसी अशाइये से। उनका ये कहना था कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान एक ताबनाक मुस्तक़बिल रखने वाला मुल्क है। हमारे लिए, सऊदियों के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। उनका यह कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी भी करेगा। $20 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे जो इस दौरे में दस्तखत हो रहे हैं, नाजरीन, वो उनका यह कहना था कि ये $20 अरब सरमायाकारी जो है, ये सरमायाकारी मुआहदे का पहला मरहला है। हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सयाहत के शोबे में भी उनका यह कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन, जैसे कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि जब वो गाड़ी में आ रहे थे सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जैसा कि आपके इल्म में है नाज़रीन कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव की थी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ, तो उनका यह कहना था कि सयाहत के शोबे में काफी उसमें किस तरह से ताउन को फरोग दिया जा सकता है, किस तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। तो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी यही कहना था कि सयाहत के शोबे में भी पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन से फायदा उठाते हुए